आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग के हवाले से पढ़ेंगे। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग आर टूल्स डिजाइन टू अलाउ measure ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस relative टू ऑल अदर्स टेकिंग द सेम टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट एक वो टूल्स हैं जिसमें हम डिज़ाइन करते हैं टू अलो मैयर ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस, जिसमें स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस कारकर्दगी जो है तलबा की वो उसकी पैमाइश करते हैं रिलेटिव टू अदर्स, दूसरों के लिहाज से। टेकिंग द सेम टेस्ट, एक ही टेस्ट लेते हुए एक ही टेस्ट लिया जाता है मुख्तलिफ स्टूडेंट से, और एक स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ उसकी परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया जाता है। A standardized test is a test that is administered and scored in a consistent or standard manner. एक standardized test जो है ये एक वो टेस्ट है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर किया जाता है and scored in a consistent and standard manner. Consistent और standard manner से standardized टेस्ट आर डिज़ाइंड इन सच ए वे। स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं इस तरीके से डैट के क्वेश्चंस, कंडीशंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग, स्कोरिंग प्रोसीजर्स एंड इंटरप्रिटेशंस आर कंसिस्टेंट, आर एडमिनिस्टर्ड एंड स्कोर्ड इन ए प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड मैनर। और पहले से तयशुदा स्टैंडर्ड एक तरीकाकार से स्कोरिंग की जाती है। एनी टेस्ट इन विच द सेम टेस्ट इज गिवन, कोई भी टेस्ट जिसमें एक जैसा टेस्ट दिया जाता है इन द सेम मैनर, एक ही तरीके से टू ऑल टेस्ट टेकर, तमाम टेस्ट लेने वालों से, इज ए स्टैंडर्डाइज टेस्ट, उसको हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहते हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्ट नीड नॉट बी हाई स्टेक्स टेस्ट, टाइम लिमिटेड टेस्ट और मल्टीपल चॉइस टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है वो नहीं हो, हाई स्टेक्स टेस्ट भी नहीं हो सकते, टाइम लिमिट टेस्ट भी नहीं हो सकते और एमसीक्यू टेस्ट भी नहीं हो सकते। द अपोजिट ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट इज ए नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट। अपोजिट जो मुखालिफ है वर्ड स्टैंडर्डाइज टेस्ट का वो क्या है? नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट। Non-standardized testing gives significant different tests to different test takers. Non-standardized test जो है उसमें मुख्तलिफ तरह के टेस्ट दिए जाते हैं, तमाम टेस्ट मुख्तलिफ तरह के टेस्ट दिए जाते हैं, लिए जाते हैं मुख्तलिफ टेस्ट देने वालों से। एंड गिव्स द सेम टेस्ट अंडर सिग्निफिकेंट डिफरेंट कंडीशंस, और गिव्स, या फिर क्या होता है कि सेम टेस्ट होता है लेकिन कंडीशंस जो है वो चेंज कर दी जाती है। वन ग्रुप इज परमिटेड फॉर लेस टाइम टू कंप्लीट, एक ग्रुप ऐसा बनाया जाता है जिसे कम टाइम दिया जाता है टेस्ट कंप्लीट करने के लिए देन द नेक्स्ट ग्रुप, दूसरे ग्रुप से। और एवेलुएट देम डिफरेंटली, या फिर उनको एवेलुएशन जो उनकी है वो मुख्तलिफ तरह से की जाती है। द सेम आंसर इज काउंटेड राइट फॉर वन स्टूडेंट, एक ही जवाब एक स्टूडेंट के लिए ठीक शुमार किया जाता है, बट रॉन्ग फॉर अनदर स्टूडेंट, लेकिन दूसरे स्टूडेंट के लिए वही आंसर जो है वो गलत शुमार किया जाता है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग हैज़ रिसीव्ड क्रिटिसिज्म फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट, एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग जो है इस पे तनकीद की जाती रही है साइकोलॉजिस्ट से, टीचर्स से, उस्ताद से और वालिदैन से। Criticism of academic testing often focuses on linguistic basis against minorities, the testing methods that may not work for all types of students, and negative reinforcement of lower performing students. Types of standardized testing. There are two types of standardized test: norm reference test and criterion reference. Norm reference testing measures performance relative to all other students taking the same test. Norm reference testing में परफॉर्मेंस जो मेजर की जाती है वो relative to all other students के लिहाज से, दूसरे स्टूडेंट्स के लिहाज से की जाती है taking the same test, और एक ही तरह का टेस्ट लिया जाता है।
It lets you know how well a student did compared to the rest of testing population. एक स्टूडेंट कितना अच्छा परफॉर्म करता है उसको कंपेयर किया जाता है बाकी टेस्ट देने वालों में से. फॉर एग्जांपल, इफ अ स्टूडेंट इज रैंक्ड इन 86th परसेंटाइल, एक स्टूडेंट की जो परसेंटाइल है वो 86th है, then means he or she did not better than 86% of the others who take the test. जिसका क्या मतलब है कि वो 86% से आगे नहीं जा सकता जिन्होंने टेस्ट दिया है. This type of testing is the most common found among standardized testing. इस तरह की जो टेस्ट की एग्जाम है वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग में शुमार होती है. क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग measure factual knowledge of a defined body of a material. Multiple choice tests that pupils take to get their lessons or a test in fractions are both examples of this type of testing. Types of standardized testing. In addition to the two main categories of standardized tests, these tests can be divided even further into performance tests or aptitude tests. Performance tests are assessment for what learning has already occurred in a particular subject area, while aptitude tests are assessment of abilities or skills considered important to future success in a school. Intelligence tests are also standardized tests that aim to determine how a person can handle problem solving using higher level cognitive thinking. Often just called an IQ test for common use, a typical IQ test asks problems involving pattern recognition and logical reasoning. It then takes into account the time needed and how many questions the person completes correctly, with penalties for guessing. Specific tests and how the results are used change from district to district, but intelligence testing is commonly during the early years of schooling. Advantages of standardized testing. Standardized testing के क्या advantages हैं? It can be obtained easily and available on researcher convenience. इसको easily किया जा सकता है, आसानी से हासिल किया जा सकता है और ये रिसर्चर के लिए आसानी से अवेलेबल भी होती है. It can be adopted and implemented quickly. इसको अडॉप्ट किया जा सकता है और इम्प्लीमेंट अमल किया जा सकता है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है क्विकली, तेज़ी से. इट रिड्यूसेस और एलिमिनेट्स एक्चुअली टाइम डिमांड्स इन इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट एंड ग्रेडिंग. ये टाइम जो है वो कम लगाती है. इट हेल्प्स टू स्कोर ऑब्जेक्टिवली. ये ऑब्जेक्टिवली स्कोर के लिए मदद देती है. इट प्रोवाइड द एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ टेस्ट. ये एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ टेस्ट भी प्रोवाइड करती है. इट हेल्प्स टू प्रोवाइड रेफरेंस ग्रुप मेजर्स. इट कैन मेक लॉन्गिट्यूडनल कंपैरिजंस. इट कैन टेस्ट लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. Disadvantages of standardized testing. It measures relatively superficial knowledge or learning. Norm reference data may be less useful than criterion referenced. It may be cost prohibitive to administer as a pre and post test. It is more summative than formative, may be difficult to isolate what changes are needed. It may be difficult to receive results in a timely manner. Recommendation for standardized testing. It must be selected carefully based on faculty review and determination of match between test content and curriculum content. Request technically manual and information on reliability and validity from publisher. Check with other users. If possible, purchase data disk for creation of customized reports. If possible, select tests that also provide criterion reference results.
check results against those obtained from other assessment methods. Embedding the test as a part of course requirement may improve students' motivation.